हेलो माय वंडरफुल फ्रेंड्स आपण मानको स्वागत अभिनंदन। आज आम आंसर राइटिंग सीरीज स्टार्ट करूचंती। आगर किछि क्लास हेची किंतु आज आम एथिक्स रो क्वेश्चन करिबा। आपण माने जानंतु जो हमर बुकलेट्स अछि मेडिसिन जो देखुचंती से बुकलेट्स रो 10 नंबर जो वॉल्यूम टा 10 नंबर वॉल्यूम रे अच्छी आपन 10 नंबर वॉल्यूम रे अच्छी एथिक्स। तो किछि क्वेश्चन आमे धीरे धीरे कवर करिबा, धीरे धीरे सब पार्ट को कवर करिबा। आज आमे एथिक्स स्टार्ट करचंती किंतु अन्य क्लास मानकरे आमे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल सिक्योरिटी एवरीथिंग सब किछि आमे डिस्कशन करिबा क्वेश्चन आंसर। कारण क्वेश्चन आंसर होची सबुठी इंपोर्टेंट। मु कहिछि अनेक थर प्रिलिम क्लियर करिवे जहाँ आपण जानिचंती, मेन क्लियर करिवे जहाँ एवं इंटरव्यू क्लियर करिवे जहाँ आपण कहउचंती। सो एनीवे एथिक्स 250 मार्क्स रो पेपर 4 नंबर पेपर तार सब प्रकार क्वेश्चन को हम डील करिवे। आज प्रथमे जो क्वेश्चन देखुचंती एटा कॉर्पोरेट वर्ल्ड ऊपर अछि। कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट एफिशिएंसी बा प्रोफेशनल एफिशिएंसी, मोरल इंटेग्रिटी केमती थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन रहिबो या रिलेटेड क्वेश्चन आसे। तेणु बोथ यूपीएससी और ओपीएससी पई दरकार। तो चलंत आगे क्वेश्चन को भल भाव पढ़िबा, तापरे अप्रोच टा जानिबा एवं आंसर केमती लिखा जाए ताको जानिबा। थैंक यू वेरी मच। आपण माने समस्ते ये क्वेश्चन आंसर बुझी सारला परे व्हाट्सएप रे बा टेलीग्राम रे आपण आंसर लिखिकी निज मनरू माने आगे बुझी सारला परे जेमिति जेकोनी जिंस सपोज मैथ हो, रीजनिंग हो, आगे करिया पई कुआ जे टेक योर ओन टाइम। निज टाइम आमे नियंती। गोटे मैथ गोटे बनेया पई सब 5 मिनिट लागि पारे बा 10 मिनिट भी लागि पारे। द मोमेंट यू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट इट टेक्स ओनली फ्यू सेकंड्स। तेणु बुझिया पई होय तो अधिक समय लागि पारे किंतु किछि क्वेश्चन बुझी गला परे आपण लेखिया पई आ बेसी टाइम लागिबो नाही। तो चलंत आरंभ करियो। क्वेश्चन होची आगे देखन क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोरल इंटेग्रिटी एंड प्रोफेशनल एफिशिएंसी in the context of corporate governance in India? Question टाइम दिया अछि। Illustrate with suitable examples। ये 10 मार्क रो क्वेश्चन 150 शब्द भीतर लिखिया पड़िबो। You have to write in 150 words. It may increase to 160 or decrease 140. It's all right, but around 150 you should write। कारण समय भी कम थाए परीक्षा रे, तेणु लिमिट वर्ड लिमिट को मत ध्यान रखिबा उचित। प्रथम जानि अछि मोरल इंटेग्रिटी और प्रोफेशनल एफिशिएंसी। ए जो दुईटी पॉइंट दुईटी की वर्ड यदि बुझी गले ताहले आपनकर काम होई जिवो। बुझी होछि तो चलंत हम धीरे धीरे आगो बढ़िबा। यार आंसर केमते लिखा जाओ, अप्रोच कोन आपन एबे जानिया को पड़िबो। धीरे बुझौछि, टिके पेशेंस रखंतु। ठीक अप्रोच टा कौन रहिबा आपण जानत। विजिबल होछि, ठीक हां विजिबल होछि, किछ असुविधा नहीं। सो अप्रोच कौन रहिबो? अप्रोच रहिबो इंट्रोडक्शन प्रथम देबे, इंट्रोडक्शन देबे, तापरे इंट्रोडक्शन पर बॉडी रहिबो, इंट्रोडक्शन पर बॉडी रहिबो, तापरे कंक्लूजन देबे। बुझ पछन माने मोट ऊपर आपन को इंट्रोडक्शन माने नहीं जे एसे परीक्षा पूरा एकदम बिग इंट्रोडक्शन नो। हमको 150 शब्द भीतर लिखियार अछि, तेणु इंट्रोडक्शन मध्ये 2-4 लाइन भीतर लिखियार अछि। बुझ परछन वेरी इंपोर्टेंट। एवं बॉडी रे जो बॉडी रहिबो मुते यूज करछि कलर जदी हे गला भलो कथा। कलर जदी लिखिबाटा टिके देखिबा जदी हे गला हाँ लिखिबाटा हे जिवो, किछ असुविधा नहीं। सो
तो प्रथम ये कौन रहिबो इंट्रोडक्शन रहिबो ठीक इंट्रोडक्शन रहिला तापरे बॉडी रहिबो एवं लास्टली आपण कौन करबो कंक्लूजन एनी क्वेश्चन यू अप्रोच three things you should keep in mind. One is introduction, second is body, and third is conclusion. In every question, this is very very important. Introduction essay introduction अलगा आउ 10 मार्क क्वेश्चन इंट्रोडक्शन अलगा जे जानी चले ठीक अच्छी किंतु जे जानी ना समस्त ये वीडियो होची ना तो इंट्रोडक्शन को ब्रीफली मेंशन करियो लिखि चेठी राइट ब्रीफली अबाउट कॉर्पोरेट गवर्नेंस कॉर्पोरेट गवर्नेंस विषय रे ब्रीफली लिखिबार अछि एवं मोरल इंटेग्रिटी आउ प्रोफेशनल एफिशिएंसी बुझिउछ एको मध्य मिक्स करिक लिखियार अछि इंट्रोडक्शन केमते लिखिबा आगु अछि उत्तर आंसर अछि डोंट वरी एवं बॉडी पार्ट रे मोरल इंटेग्रिटी रो एग्जांपल मध्य देबे देखन सुइटेबल एग्जांपल लिखाइ एग्जांपल देबे बुझ बचन गोटे मोरल इंटेग्रिटी रो देबे कोन एग्जांपल लिखाइ देखन राइट मोरल इंटेग्रिटी विथ सुइटेबल एग्जांपल्स एको मध्य एग्जांपल दबार अछि एवं प्रोफेशनल एफिशिएंसी को मध्य सुइटेबल एग्जांपल दबार मोर एठी अछि देखो यार मध्य एग्जांपल दबार थरे बुझी जांतु पूरा कायदे जानि जिवे कारण आंसर राइटिंग विषय रे जानिबा एते जरूरी जे आपण फील करबे क्लियर एते क्लियर हला इंट्रोडक्शन रहइबो कंक्लूजन सिंपल था गोटे के आगो को नउची देखन द इंट्रोडक्शन केमते लिखा जाय ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट इंट्रोडक्शन कोन लिखा जाय भलो रे इंट्रोडक्शन कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहिथिली कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बुझियार अछि कॉर्पोरेट गवर्नेंस आगे पढंतु कॉर्पोरेट गवर्नेंस refers to the framework of principles refers to the framework of principles framework of principle देखो लिखा है principles practices regulations ये सब लिखा है ना एको ऐड करियर अछि to guide business management गोटे जो हमर कॉर्पोरेट गवर्नेंस होची कोन जे तार प्रिंसिपल गोटे कॉर्पोरेशन रो तार प्रैक्टिसेस तार आइडियोलॉजी तार जो पॉलिसीज तार बिजनेस मैनेजमेंट एको ये सब को कोन करिया पड़िबो माने भाबी करी तको आको लिखेउ पड़िबो भलरे बुझंतु धैर्य धरंतु जे कॉर्पोरेट गवर्नेंस को आगो लिखिबार अछि इंट्रोडक्शन पार्ट रे इंट्रोडक्शन लिखाई देखो इट इंट्रोडक्शन लिखाई क्लियर कॉर्पोरेट गवर्नेंस यू कैन राइट योर ओन लैंग्वेज निजो लैंग्वेज में लिखि परिबे एमति भी लिखि परिबे कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज डिफाइंड एज ए सेट ऑफ प्रिंसिपल्स सेट ऑफ प्रैक्टिसेस सेट ऑफ पॉलिसीज और फ्रेमवर्क फॉर द मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर द मैनेजमेंट ऑफ कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन एमति भी लिखि परिबे इन एनी language what you feel comfort you can write सेमनी माने नै जे ई सब लिखा मु आपन बतौछि केम लिखा एठी हमको दबार अछि ये तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बुझे लागो मोरल इंटेग्रिटी ता कोन एट कहयर अछि मोरल इंटेग्रिटी इंट्रोडक्शन चलछि बुझ बछन इंट्रोडक्शन मोरल इंटेग्रिटी रिप्रेजेंट्स an unwavering commitment to ethical conduct moral integrity कौन moral integrity होची ethical conduct जहाँ को honesty बा preservation of moral values ए दुई तीन टा कीवर्ड जदि मन रखि देबे ताहले आपण moral integrity पूरा बढ़िया से लिखि परिबे आपण निजे भाषा रे लिखि परिबे moral integrity is key to corporate governance. Moral integrity is key factor for management of any corporate organization. In various dimensions, moral integrity can be called as a process of maintaining honesty, as a method of maintaining integrity, bringing integrity inside the corporation among the
एम्प्लॉइज एमंग दी फेलो एम्प्लॉइज ए कथा मते आप लिखि परिबे बुझियो छी तापर हम कोन करिया प्रोफेशनल एफिशिएंसी देखन म आपन कहितली कॉर्पोरेट गवर्नेंस को टिके लिखिवार अछि तापर मोरल इंटीग्रिटी लिखिवार अछि तापर प्रोफेशनल एफिशिएंसी आपण एठी निज मनोर मध्ये जोड़ी परिबे फिर भी आगे एटे बुझंतु प्रोफेशनल एफिशिएंसी पर्टेन्स टू द कॉम्पिटेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आई विल एक्सप्लेन प्रोफेशनल एफिशिएंसी कौन एटा तो देखि देले आंसर अछि मु आपण एबे कहूची गोटे मिनिट सुनि दिउ प्रोफेशनल एफिशिएंसी इज द डिग्री ऑफ अचीविंग expertise is the degree of achieving expertise also bringing all kinds of growth in the organization. Are you getting my point? So you can write in your own language that professional efficiency is the process of bringing effectiveness to the organization. What is organization? Let me clear. Organization, according to Wood Revolution and many thinkers, political thinkers, public administrative thinkers, they say that you can say is the efficiency with effectiveness. And in ethics re kon hue na professional efficiency can be achieved through effectiveness. What kind of effectiveness? Effectiveness means cost effective, relationship management, and various kinds of management inside the organization. Because the moment you mu apun कहउतली Wood Revolution कोंतु बा एल्टन मायो कोंतु बा बहुत बड़े थिंकर्स अछंती सेम विषय कहिसंती the organization is just like a family is also one organization. Even the village is also organization. Even the whole world is organization. In simple words, organization is the congregation of people. Organization is the, you can say, various elements comprised in a family. It may be corporate family, it may be normal family, or any kind of family. Family means association. So organization means, simply you can say, various people, employees, all kinds of associations merged, or there is coordination for achieving organization goals. And in organization, efficiency can be achieved with moral integrity and moral values. आमे जेहेतु एथिक्स पढुचंती एथिक्स रो क्वेश्चन करूचंती तो माइंड रे सब एथिक्स मोरालिटी इंटेग्रिटी ये सब जिंस माइंड रे रखिवार अछि क्लियर तापर आपन कहबी बॉडी विषय आपन को पढिबे ठीक अछि बॉडी विषय कथा हवा चलंतु बॉडी विषय कथा आइ जवा बॉडी रे देखंतु बॉडी रे मोरल इंटेग्रिटी को गोटे ए करिवे बुझियो माने ता विषय लिखिबे व्हिसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन माने आपन कथा कहूची इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट निजे लिखि देखंतु इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस मोरल इंटेग्रिटी इंक्लूड्स प्रोटेक्टिंग व्हिसिल ब्लोअर्स माने जे इंफॉर्मेशन दियंती ऑर्गेनाइजेशन बा जे कोनसी गवर्नमेंट हो कि प्राइवेट हो बुझियो किछि डेवलपमेंट पई किछि सिक्रेसी बा माने कोन घटुची असुविधा सुविधा जणाउचंती रॉन्ग कोन चलची राइट कोन चलची ठीक प्रोसेस रे चलची कि नाही व्हिसिल ब्लोअर्स माने से माने इन्फॉर्मेशन दियंती तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट रे कॉर्पोरेट गवर्नेंस तांको प्रोटेक्ट करिया पई मध्य ए कथा आपण लिखिबे बॉडी रे गोटे एग्जांपल देई परिबे बुझबे जे मन नुवा जानुचन टिके त कष्ट होई पारे किंतु बुझी होई जिवो गोटे एग्जांपल हमें दउचे कंपनीज एक्ट 2013 provides legal protection to whistleblowers ये कथा अपन लिखि देबे तबरे इंडिपेंडेंट बोर्ड ओवरसाइट रहइबो या कथा भी लिखिबे इसमें एग्जांपल दे देबे बुझियो कोड ऑफ एथिक्स एग्जांपल दे देबे ठीक इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग ये सब जिंस अपन दे देबे देला परे आपनकर कोन हला ये जिंस कंप्लीट हे गला
किंतु आपण जो कंक्लूजन अछि मु एठी कहया पई चाहूची कंक्लूजन रे कोन करिया पड़े म आपन कहूची कंक्लूजन पार्ट रे आपण कोन लिखिबे कंक्लूजन पार्ट रे लिखा इज क्लियरली आपण ए सब देला पर लास्ट रे लिखि परिबे बुझि परछन जे फॉर द क्वेश्चन आपण जानछन तो क्वेश्चन भूली गला सुधा आइजो मु क्वेश्चन आपण देखौ संग संग क्वेश्चन देखो कोन ले कंक्लूजन कोन लिखे क्वेश्चन डा देखो कंक्लूजन रे इते एग्जांपल दे देले इंट्रोडक्शन दे देले सब देले कंक्लूजन ता को कोन करिवे ये तीनटा कीवर्ड को मिसै के लिखिबे यस इट इज जस्टिफाइड दैट मोरल इंटीग्रिटी एंड प्रोफेशनल एफिशिएंसी कैन बी अचीव्ड इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू मोरल प्रिंसिपल्स वैल्यू जहा जाम बुझे ताको जोड़ी दे काम सरला एतिक आगे कथा बुझियो तो आपण कौन करेंगे सब क्वेश्चन आंसर लिखिकी आप व्हाट्सएप करदे बा टेलीग्राम करेंगे जो मैंने इंटरेस्टेड अच्छे बुक नापी से स्पीड पोस्ट नहीं करेंगे थैंक यू वेरी मच लव यू गाइस थैंक यू वेरी मच कीप गोइंग हेलो हेलो माय वंडरफुल फ्रेंड्स आपण मानको स्वागत अभिनंदन आज आम एथिक्स सीरीज रो सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 विषय डिस्कशन करबा ये सीरीज ऑलरेडी स्टार्ट हो सारी आपण माने समस्ते एथिरे पार्टिसिपेट करंतु एवं क्वेश्चन आंसर केमते लेखा होची बा तार फॉर्मेट कोन तो देखिकरी लेखा लेखी करंतु 11 टणा खातर रोलिंग खातर एवं व्हाट्सएप नंबर जो अछि सेथिरे बा टेलीग्राम नंबर जो अछि से सेम नंबर आपण करेक्शन करै परिबे ता सहित आपण स्पीड पोस्ट रे मेन पई आंसर राइटिंग जो 10टा बुकलेट आपण देखुचंती नै परिबे से जा हो आज कार्यक्रम आरंभ करिबा क्वेश्चन टा को आगे भलरे पढंतु क्वेश्चन होची इंटरनेशनल एड ऊपर इंटरनेशनल एड इज एन एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ हेल्पिंग रिसोर्स चैलेंज्ड नेशंस इंटरनेशनल एड इज एन एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ हेल्पिंग रिसोर्स चैलेंज्ड नेशंस रिसोर्स चैलेंज नेशन फॉर एग्जांपल नेबरिंग कंट्री जो अछि नेपाल मालदीव्स पाकिस्तान जो भी कंट्री अच्छी तो तांकर रिसोर्स बा आमको भी कहीं इंटरनेशनल एड दौरान आम रिसोर्स जदि किसी चैलेंजेस थाए यूटिलाइजेशन ठीक से हो पारनी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बा डेवलपमेंटल पॉलिसी ठीक से इम्प्लीमेंट हो पारनी ड्यू टू नेचुरल कैलामिटी किसी भी कारण ए रिलेटेड ये क्वेश्चन टा एवं ए इंटरनेशनल एड आमे जहाँ को दौरान बा आमे काहाटू एक्सेप्ट करुचंती सेथिरे एथिक्स टा कौन रहिया दरकार तार बेस बा फाउंडेशन ऑफ इंटरनेशनल एड एथिकली कौन हवा दरकार से विषय क्वेश्चन 150 शब्द भीतर लिखिबे एवं 10 मार्क रो ये क्वेश्चन तो चलंत आरंभ कर दवा क्लियर देखो यार आंसर अप्रोच केमती रहइबो मु कहि छी इंटरनेशनल एड ऊपर क्वेश्चन टा तो इंट्रोडक्शन रे निश्चित भाव इंटरनेशनल एड आ किछि फैक्ट अपन रखिबे एवं बॉडी रे एथिकल फाउंडेशन कोन रहिबो इंटरनेशनल एड रो ताको मध्ये लक्ष्य रखिबे तो पॉइंट करिवे एवं एथिकल इश्यूज बा इंटरनेशनल एड बाटमरणा होउची कि नाही ठीक से इंप्लीमेंट हैला कि नाही यार नेगेटिव एस्पेक्ट टा कौन क्रिटिसिज्म कौन पई करा जाउची ये सब ध्यान रखिबा पई आपण बॉडी रे मध्ये लिखि परिबे ता सहित फाइनली जतले कंक्लूजन आपण देबे सेते बेले गुडे होलिस्टिक कंक्लूजन होवा दरकार रेडी तो चलन इंटरनेशनल एड विषय रे प्रथमे कौन इंट्रोडक्शन पार्ट रे लिखिबे देखिबे लेखाई देखंतु इंटरनेशनल एड can be exemplified by India's contribution of nearly 96 crore to Nepal 2015 रे नेपाल को जो आमे असिस्टेंस बा तांगा जो अर्थक्वेक हेतला आमे पाखा पाई 100 कोटी टंका असिस्टेंस देथिले इंटरनेशनल एड हिसाब रे से विषय रे आपण इंट्रोडक्शन मध्ये डायरेक्ट स्टार्ट करिवे किछ असुविधा नै एवं ता सहित एठी जोडी देबार अछि however ethics surrounding the international aid have become
increasingly important in contemporary scenario. माने एठी ये जगह इंटरनेशनल एड रे कनसर्न बढ़ी बा जो कहते गोटे इम्पोर्टेंस बढ़ी जे एक्चुअली जो डेलीवर होची एडटा इंटरनेशनल एड जो डेलीवर गोटे देश को दिया गला प्रकृत रे यूटिलाइज हेची एथिकली ना हेनी माने सपोज इंडिया इज गिविंग 100 crore to Nepal or any country in the world as international aid. We have to check ethically whether that money, that fund, aid is utilized properly, effectively or not. प्रकृत effectively implement बा policy development work लागी कि नहीं ये प्रकार ethical standard को लक्ष्य करियार अछि बुझियो तापर बॉडी रे लिखिबे कौन लिखिबे एथिकल फाउंडेशन मु कहितली बॉडी रे एथिकल फाउंडेशन विषय लिखिबे अल्ट्रुइज्म विषय लिखि परिबे अल्ट्रुइज्म माने होची फिलोसॉफी रे बा एथिक्स रे होची ऑल गुडनेस माने ईगो माने बहुत प्रकार अछि फॉर एग्जांपल किंतु ईगो माने होची सेल्फ सेंटर्ड सेल्फ डेवलपमेंट किंतु अल्ट्रुइज्म होची डेवलपमेंट फॉर ऑल अल्ट्रुइज्म मींस डेवलपमेंट फॉर ऑल सेमिति अल्ट्रुइज्म दुनिया मीनिंग अछि यही सेन्स रे होची जे आमे गोटे देश को फंडिंग करूचंदी एड दउचंदी एवं प्रकृत रे तार डेवलपमेंट होची एवं तार उन्नति होची सब प्रकार ग्रोथ रे आमे सहयोग करछे किछ ना किछ ए प्रकार भावना को कहा जाय अल्ट्रुइज्म इज द फंडामेंटल एथिकल फाउंडेशन अल्ट्रुइज्म इज द फंडामेंटल एथिकल फाउंडेशन of international aid which emphasizes कौन emphasize करे altruism welfare of others welfare of other countries other nations other people also बुझियो ये कथा रखी आ गोटे पॉइंट आपण मन रखे ग्लोबल सॉलिडारिटी होची गोटे एथिकल फाउंडेशन जोटा कि इंटरनेशनल एड रो जेमे कोविड-19 वैक्सीन बा ऑक्सीजन बा विभिन्न प्रकार मेडिकल फैसिलिटीज आमे अन्य देश मन को मध्य सहयोग करछे आप जानथिबे ड्यूरिंग द टाइम कोविड इंडिया कोऑपरेटेड एंड सप्लाइड मेनी कंट्रीज मेडिसिन इवन आल्सो इंजेक्शंस बूस्टर्स एवरीथिंग डेवलपमेंटल असिस्टेंस एथिकल माने जो इंटरनेशनल एड रो एथिकल जो फाउंडेशन रो डेवलपमेंटल असिस्टेंस गोटे पार्ट अछि जेउथरे कैपेसिटी बिल्डिंग एड दबा द्वारा कोन होय कैपेसिटी बिल्डिंग भी हुए ना तो कैपेसिटी बिल्डिंग पई एथिकल फाउंडेशन को जाय छै जेमते गोटे मार्शल प्लान थिला जोटा अपन जानथिबे सेकंड वर्ल्ड वॉर टाइम में जोटा कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी थिला यूरोपियन माने बुझे दो से जिनसडा मार्शल प्लान यू कैन से आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर जो यूरोपियन नेशन माने सेकंड वर्ल्ड वॉर पार्टिसिपेट करथिल ताका जो ध्वंस विध्वस्त अवस्था थिला सेथिरु रिकवरी हवा पई जो प्लान हेतिला तार ना होची मार्शल प्लान ता माने आपण कहि परिबे मार्शल प्लान होची गोटे लॉन्ग टर्म रिकवरी पॉलिसी और टेक्नोलॉजी और मेथड और प्रोसेस which can be also part of international aid कारण international aid द्वारा जो युद्ध बा वार बैटल पाई नष्ट हो जाई किछि जिंस मानव सभ्यतार किछि ना किछि क्षति घटिछि ताकू सुधार करिया पई ताकू रिकवर करिया पई पुनश्च गोटे सभ्यता को फेरिया पई पुनश्च गोटे मेन स्ट्रीम को फेरिया पई ऑल काइंड्स ऑफ फैसिलिटीज अवेलेबल करिया पई इंटरनेशनल एड आवश्यकता अछि ये होची गोटे फाउंडेशन कहार इंटरनेशनल एड रो एथिकल फाउंडेशन कैपेसिटी बिल्डिंग सपोज आपण बिजनेस करिया चाहउछंदी बट यू हैव नो मनी किंतु कई जने एड देला कई जने असिस्ट कला तो आपण फाउंडेशन पकेले एवं धीरे धीरे ग्रोथ कले दैट इज आल्सो एथिकल पार्ट एजुकेशन हेल्थ मध्ये एथिरे आसुची प्रमोट एजुकेशन इंटरनेशनली ग्लोबली फ्रॉम लोकल टू ग्लोबल तापर इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी जेमति ग्रीन क्लाइमेट फंड बा ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी अदर इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस और बॉडीज
जो जहाँकि बिना एड रे केमिति माने सपोज प्लांटेशन करिवे बा एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन पई किछि कार्य करिवे रिवर पॉल्यूशन को फ्री करा जिवो बा वेस्टेज को इकोलॉजिकल वेस्टेज जो ताको मैनेज करिवे केमिति करिवे बिना एड रे ही पर ये मध्ये होची गोटे फाउंडेशन तापर बेले बेले क्रिटिसिज्म मध्ये देखा जाए इंटरनेशनल एड रे क्रिटिसिज्म देखा जाए इंटरनेशनल एड रे माने मु आपन टिके सरल भाषा रे बुझे दउछु सपोज आपन गोटे बिजनेस करिया चाहउचंती बा पाठ पढिया चाहउचंती के जण सहयोग करिया चाहउची किंतु आ गोटे लोक कहउची ताकू सहयोग कले किछि लाभ नै से पढिबो तो मनी वेस्ट हो कोन पय दबा ताकू एवं किछि देश मध्ये से बेले कोन पय इंटरनेशनल एड दउचन तांको से तो नेकरी टेररिज्म बा अन्य बैड एक्टिविटीज रे लगौचन पण एई दृष्टिरु मध्ये क्रिटिसिज्म रो शिकार हो पड़े ये गोटे कथा ता सहित पॉलिटिकल पिटफिल्स जाऊ कहती माने नोबल इंटेंशन थिला थाए कहार नोबल इंटेंशन होची इंटरनेशनल एड रो जे हेल्थ डेवलपमेंट हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करा जिवो हेल्थ ऊपर काम करा जिवो मेडिकल फैसिलिटी पे काम करा जिवो युद्ध रे कोठी देश ध्वंस विध्वस्त ताकू रिकवरी करा जिवो बा एनवायरनमेंट ऊपर काम करा जिवो ये सब होची नोबल इंटेंशन कहार इंटरनेशनल एड रो तार फाउंडेशन एथिकल फाउंडेशन किंतु आ गोटे कथा क्रिटिसिज्म करा जाए जे पॉलिटिकल मैनिपुलेशन मध्ये होची ये कथा मध्ये क्रिटिसाइज करा जाए ठीक जेमते यूएस किछि अमेरिकन कंट्रीज को देला कोन माने एड देला मोर फॉर एग्जांपल हाइटी गोटे कंट्री अछि HITI हाइटी कैरिबियन सी रे अपन देखिबे कैरिबियन सी रे कैपिटल होची पोर्ट ऑफ प्रिंस बोल देखिबे सेठी देखाला अर्थक्वेक पई सुनामी पई बा जे कोन से नेचुरल कैलामिटी पई असिस्टेंट असला नॉट ओनली फ्रॉम अमेरिकन गवर्नमेंट आल्सो डिफरेंट कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड तुम देखाला सेठी ठीक से ही परनी बा कोनिस कंट्री को फंडिंग करा गला एनवायरनमेंट पई बा अन्य फैसिलिटीज पई इंफ्रास्ट्रक्चर पई किन देखला लोग से माने अन्य टेररिज्म एक्टिविटीज रे यूटिलाइज कले तो एमिति भी अछि इकोनॉमिक डिपेंडेंसी हे जाए माने इंटरनेशनल एड तो मिलुची आ इंटरनेशनल एड तो मिलुची हमर कोन जाउची बुझिउची तो ये प्रकार मध्ये गोटे इंटेंशन डेवलप करि जाए बुझिउची तापर करप्शन इंटरनेशनल एड जो आसे विभिन्न कंट्री जो दियंती बेले करप्शन बेले काई प्राय समय करप्शन मध्ये माने शिकार हेताय जेतो फंडिंग आसे डेवलपमेंट काम लागे करप्शन में तासे आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट मध्ये हे जाए से जा हो एक सब ठीक से लिखिबे लिखिक रे आपण व्हाट्सएप करिवे कंक्लूजन रे कोन देबे कंक्लूजन ता बुझंतु द एथिकल डायमेंशन ऑफ इंटरनेशनल एड आर कॉम्प्लेक्स एंड मल्टीफेसेटेड ये बहिरे अछि आपण भलसे करिवे बुझे एटा 10 नंबर वॉल्यूम खाली एथिक्स सब 10टा वॉल्यूम अछि आपण स्पीड पर्सन कले हबो सुनतु एठी एंडिंग ता बुझंतु ethical dimensions of international aid are complex and multifaceted माने ethical dimension international aid का क्वेश्चन एरी ऊपर आछि बहुत कॉम्प्लेक्स और मल्टीफेसेटेड एवं एठी जानियार अछि गोटे बैलेंस दरकार नोबल इंटेंशन और पोटेंशियल पिटफॉल्स माने जो इंटेंशन रे इंटरनेशनल एड दिया जाए एवं जो मैनिपुलेशन होची बा करप्शन होची बा किछि भी मिस हैंडल होची मिस यूटिलाइज होची ता गोटे बैलेंस करिया पई फेयरनेस आनिया पई माने कंक्लूजन आपण लिखि परिबे बुझ पछ एती कथा तो आपण माने लेखिकरी आपण व्हाट्सएप टेलीग्राम कर दो टेलीग्राम चैनल भी जॉइन कर दो थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस लव यू गाइस हेलो माय वंडरफुल फ्रेंड्स आपण मानको स्वागत अभिनंदन आज रे जो क्वेश्चन एथिक्स माने एथिक्स रो 3 नंबर क्वेश्चन रिलेटेड टू करप्शन राइट करप्शन क्वेश्चन टा के देखंतु करप्शन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ फेलोर ऑफ कोर वैल्यूज इन द सोसाइटी समाज रे कोर वैल्यूज बा इंग्रेडिएंट जो संस्कार जाऊ कहती तार लॉस को माने तार लॉस जो करप्शन बढ़ी माने ए टाइप रे मीनिंग आसुची
माने कोर वैल्यूज जाओ कोन in your opinion what measures can be adopted आपण को मतरे मेजर्स बा कोन एमती किछि उपाय अछि जहा द्वारा कि कोर वैल्यूज को अपलिफ्ट करी हबो समाज रो कोर वैल्यूज को अपलिफ्ट करी हबो यू सी एटा होची 10 मार्क रो माने क्वेश्चन भाबंतु तो कथा होची यार ये होची एथिक्स रो क्वेश्चन 10 नंबर बुकलेट रे अछि आपण को स्पीड पोस्टर नहीं परिबे से जा हो किंतु मो मतरे जो क्वेश्चन टा खाली एथिक्स रे नहे even also internal security even social जो issues अच्छी सेथरे मधे क्वेश्चन सेट हे पारे तो सब आड़ को ये क्वेश्चन काम दबो देखंतु ये क्वेश्चन को अप्रोच करिए मु कहि केमते एको लेखि करी आपण व्हाट्सएप करि पारे जो नंबर अछि ठीक अछि प्रथम जानियार अछि करप्शन टा कोन व्हाट इज करप्शन you see corruption has many definitions. There is no certain definition regarding the definition of corruption. Corruption is not only taking bribe, money, wealth, or ill practices. Corruption can be defined in terms of time also, not in terms of money only. जने समय बा पंक्चुअलिटी बा पंक्चुअल नथिले मध्ये कुहा जाय करप्ट लोक बोली कुहा जाय तो करप्शन हमें नॉर्मली बुझी थांती करप्शन को गोटे रॉन्ग सेंस रे जे करप्शन होची मनी बा धन बा जा कोंदे घूस एमितिया नुहे करप्शन वाइडर डेफिनेशन अछि वाइडर मीनिंग अछि से जा हो ये क्वेश्चन को केमिति डील करिवे तीनोटी पार्ट रे तीनोटी माने स्टाइल माने जा कोन प्रोसेस रे को आंसर करिवे जेमति म आगुर बुझितिले अन्य क्वेश्चन गुड को प्रथम इंट्रोड्यूस करियार अछि रिगार्डिंग करप्शन एंड कोर वैल्यूज व्हाट आर द कोर वैल्यूज इन सोसाइटी तर बॉडी रे करप्शन एज द मैनिफेस्टेशन ऑफ फेलियर ऑफ कोर वैल्यूज इन सोसाइटी या विषय लिखिबे एवं मेजर्स कोन एमती प्रतिहत करिया पई करप्शन को बा समाज रे गोटे परिवर्तन आनिबा पई कोन वैल्यूज बा कोन प्रोसेस बा मेजर्स स्टेप्स नहीं परिबे पदक्षेप नहीं परिबे ये विषय लिखिबे एवं फाइनली गोटे अप्रोप्रिएट कंक्लूजन देबे सिंपल कथा मैं गोटे बड़ कर दउची देखंदु टिके बड़ कले आपण बुझी परिबे देखा जाउथबो करप्शन इंट्रोडक्शन रे कोन रहबो करप्शन इन्वॉल्व्स मिसयूज ऑफ पावर अथॉरिटी रिसोर्सेस फॉर पर्सनल गेन ये डेफिनेशन एमती लिखि परिबे often violating ethical principles and values मुटिके यार जाउची तल देखा जिबा आपन को तापर लिखाई छी इन कंट्रास्ट कोर वैल्यूज रिप्रेजेंट फंडामेंटल बिलीफ्स एंड गाइडिंग प्रिंसिपल्स रिफ्लेक्टिंग सेंट्रल प्रायोरिटीज एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स फॉर एग्जांपल इंटेग्रिटी इज द कोर वैल्यू डायरेक्टली अपोजिंग द करप्ट प्रैक्टिसेस ऑफ एम्बेजलमेंट माने मोटा मोटी भाव रे करप्शन जो अछि माने एठी गोटे डेफिनेशन दिया आइछि जोडा हो कुआ जे मिसयूज ऑफ पावर अथॉरिटी रिसोर्स इवन आल्सो टाइम इवन आल्सो वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल वैल्यूज द मोस्ट इंपोर्टेंट इज दैट इंटेग्रिटी इज द कोर वैल्यू व्हिच इज डायरेक्टली अपोजिंग करप्ट प्रैक्टिस फॉर पर्सनल गेन पे जो ऑफिसर्स माने हो खाली ऑफिसर्स काहे की साधारण नागरिक मध्य पर्सनल जीवन रे माने जो ब्राइब नबा बा कोनस कार्य पई लाळायत हबा ये प्रकार जिनस मध्य करप्शन आसुछ समय अनुଯାयी कमिटमेंट न रखिबा ये मध्य करप्शन आसुछ बुझ परछन निजर कि ऑफिसर हे गेले पावर जो अथॉरिटी मिली तार मिसयूज करबा ये मध्य करप्शन आसुछ सो करप्शन हैज बिकम ए वाइल्ड phenomenon nowadays since ancient time till the date corruption is spreading like anything. It's just like virus, bacteria. So what I mean to say, corruption can be checked through different steps, different measures. एक कथा अपन बुझिया दरकार एवं क्वेश्चन मध्ये से कथा कुआई अपन टिके आगु जिबे बॉडी रे कोन लिखाई देखो ए लिखाई जी बॉडी ठीक बॉडी रे लिखाई छी
करप्शन एज द मैनिफेस्टेशन ऑफ फेलोर ऑफ कोर वैल्यूज ई जो लिखा है एथिरे पॉइंट कौन रहे देखो इरोजन ऑफ इंटेग्रिटी देखो भलरे मु पेन भी यूज कर परिबे कि बुझे दूची आपण बुक रे पढ़ी देबे ठीक अछि बुक रे पढ़िबे डिटेल्स अछि हजार खन खाली एथिक्स रे क्वेश्चन अछि करप्शन एज द मैनिफेस्टेशन ई जो पॉइंट कौन इरोजन ऑफ इंटेग्रिटी वर्तमान पर्सनल इंटेग्रिटी नाही आउ माने कमी गलान जा फल करप्शन इंडिविजुअल जे व्यक्ति विशेष निज एथिकल प्रिंसिपल सहित कंप्रोमाइज करूचंती डिसऑनेस्ट होचंती जा फल करप्शन बढ़ी बढ़ी चली डिसरिगार्ड फॉर रूल ऑफ लॉ जो अच्छी ताको मैनिपुलेट करके लीगल बेनिफिट्स पाई लीगल प्रोसेस को निज इंटरेस्ट रे प्रोटेक्ट करूचंती निज इंटरेस्ट रे लगाउछ रूल ऑफ लॉ ये गोटे पॉइंट तापर नेग्लेक्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी पूरा देखा जो किछ असुविधा नहीं मु ये कर दूची नेग्लेक्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी टिके छोटो भी कर दबा टिके छोटो कर देले भलो हां क्लियर देखा किछ असुविधा नेग्लेक्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी बर्तन अकाउंटेबिलिटी मध्ये कमी कमी गला लॉस ऑफ ट्रस्टवर्दीनेस भी ट्रस्टवर्दीनेस एटा भी गोटे भलो पॉइंट when trustworthiness erodes it leads to corruption trustworthiness गोटे पॉइंट अछि ता सहित डिसरिगार्ड फॉर फेयरनेस प्रति डिसरिगार्ड जेमनि पानामा पेपर लीक्स हेतला एको मध्ये आपण लिखि परिबे पानामा पेपर लीक्स आपण देई परिबे ता सहित अलगा बहुत गुडे पॉइंट अछि आपण सेठी मध्ये ऐड करबे जेहेतु कम समय तेणु अल्प रे लिखिया पड़िबो ताले ये जो केमिति पुनी एटा हटि परिबो मेजर्स के कौन स्टेप नेले सोसाइटी रे कोर वैल्यूज रही परिबो बा रिटर्न हे परिबो एजुकेशन एंड अवेयरनेस माने नेल्सन मंडेला once said that education is the best weapon to rule this world so through education through not only all these types of physical and vocational educations spiritual education value based moral based education ethical education spiritual or what I say conscience based education right these education can remove the mental fatigue and all those narrow mindedness so that corruption can be checked and moral values or you can say ethical values core values in the society can be maintained and retained this is the point you should remember tapre strong legal framework means here we can say that judiciary must play a vital role for example in India CBI Central Bureau of Investigation or any kind of investigating agency must be very strong to check corruption class करूची आस करूची आस नम करिवो आस मो पास चली क्लास चली आस नम खाली नम करी पळेबो मु क्लास करिवो परे काय आइबो ना आसी नम कर दे दी हाथ रे टाटा गला दी हाथ नम कर ओटारे खेलुचो कोइलो hello my wonderful friend हो जा ये करतम पढ़े दा अल्प अछि थिबो मा पाके so what I mean to say how core values in the society can be uplift can be maintained retained preserved education द्वारा creating awareness self awareness regarding the corruption strong legal framework ये सब ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी रहिबा दरकार व्हिसल ब्लोअर प्रोटेक्शन मीन्स जो माने खबर दउचन करप्शन होची बा किछि इलीगल एक्टिविटीज होची हां सोसाइटी रे समाज रे तांको जो माने तांको प्रोटेक्शन दरकार सेति पई इन 2014 व्हिसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट मध्ये आसिला व्हिच पर्सन एक सब माइंड रखिबे एथिकल लीडरशिप तासा सिविल सोसाइटी एंगेजमेंट एमती रहिबार जरूरी ठीक
तापर फाइनली कंक्लूजन आपण दे परिवे द डेटोरेशन ऑफ कोर वैल्यूज विद इन सोसाइटी क्रिएट्स एन आइडियल एनवायरनमेंट फॉर करप्शन टू थ्राइव माने कहर अर्थ होची जे सोसाइटी कोर वैल्यू जदी कमी कमी जीवो ताले सुजोग मिलिबो गोटे भलो एनवायरनमेंट मिलिबो करप्शन को थ्राइव करिया पे बढ़िया पई बा सस्टेन करिया पे सेथि पई कोलैबोरेटिव एफर्ट्स दरकार समस्त सहयोग दरकार टू check that corruption and establish the core values in the society. This is all about this question. I hope you got this point. So what I mean to say, please write down all these points and WhatsApp. Question टा आपण देखंतु आउथरे देखौछि. Question टा भलरे पढिबे एवं लेखिबे पठिबे. जो माने बुक नै नहंती एठी मु बुझौछि देखंतु. जो माने बुक नै छन बुक को 3 थर पढिबे आराम से हबो. Thank you for joining us. Love you guys. हेलो माय वंडरफुल फ्रेंड्स, आपण मन को स्वागत अभिनंदन. आज हमें एथिक्स सीरीज रो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करबा. क्वेश्चन टा ठीक से भल से पढंतु बुझंतु. मु कहि जे आपण मन को थरे बुझी गेले तापरे लिखले आपण सब जानि परिबे. पिला माने भी जो क्वेश्चन आंसर हमें करौचु ताको लेखिकरी व्हाट्सएप करूचंती. एक कथा मु जणी सारचे टेलीग्राम चैनल ले. आपण टेलीग्राम चैनल भी जॉइन कर जिवे. आ ये जो बुकलेट अछि ना, यार 10 नंबर बुकलेट टा मु पढौची. 10 नंबर बुकलेट 10 नंबर बुकलेट ठीक अछि. तो चलंतु क्वेश्चन टा आगे पढिबा कोन अछि. क्वेश्चन देखंदा. In the context of work environment, in the context of work environment, differentiate between coercion and undue influence. या विषय रे क्वेश्चन टा अछि. ये क्वेश्चन माने आगे बुझियार अछि. एटा 10 मार्क रो क्वेश्चन. 150 शब्द भीतर आपण लिखिया पड़िबो. आगे बुझिबार अछि जे कोएर्शन एवं अनड्यू इन्फ्लुएंस कोन. सिंपल लिटरेरी सेंस रे यदि बुझिबे कोएर्शन होची वन टाइप ऑफ फोर्स. अनड्यू इन्फ्लुएंस होची दैट इज फोर्स in a indirect manner. Suppose in any organization, in any work atmosphere, sometimes you will see that something is done by force. Something is done by force. That is called coercion, intimidation. And in certain cases you will find in organization undue influence. Undue influence means misuse of power and authority. Simply misuse of power and authority. तो कथा होची ये जो कोएर्शन टा होची लीगल एक्शन हेई परिबो. देयर इज सर्टेन वर्ड्स लाइक हरासमेंट, ओवरवर्क, माने ये विषय रे आपण लीगल स्टेप नै परिबे. किंतु अनड्यू इन्फ्लुएंस लीगल स्टेप सेमती नाही. मोरालिटी सेटी इन्वॉल्व अछि. तबे से जा हो चलंतु धीरे धीरे को बुझी दबा. आंसर केमते लिखिबे मु आपन कहूची. कहिचे आपन मानको प्रथमे इंट्रोडक्शन रहइबो, तापरे बॉडी रहइबो, कंक्लूजन रहइबो, होगी ना. तो इंट्रोडक्शन पार्ट रे आपन कोएर्शन और अनड्यू इन्फ्लुएंस विषय किछि लिखिबे. वर्क प्लेस भीतर कोन होची एवं बॉडी रे डिफरेंशिएशन बा जो डिफरेंस टा को लिखिबे. चलन इंट्रोडक्शन पार्ट टा को बुझी जिबा. In the workplace, clearly लिखा है. In the workplace, coercion employs force or intimidation, while undue influence is manipulates trust, both leading to unfair control over decision making. तापर देला these behaviors result in abusive management, eroding trust, hindering communication, and fostering unhealthy work environment. For example, supervisor coercing employees
into unpaid overtime or using undue influence of personal gain माने बेले बेले ऑर्गेनाइजेशन कौन बेले बेले कहीं बहुत जाए देखिए आप ऑर्गेनाइजेशन रे जो माने एम्प्लॉय अछन ताको फोर्सफुली किछि काम करिया पे ओवर ड्यूटी करिया पे ओवर टाइम करिया पे दिया जाए एवं न कले से माने लॉस तांकर हुए से जा हो बर्तमान आपको जानियार अछि डिफरेंशिएशन बा डिफरेंस कौन अछि कोएर्शन और अनड्यू इन्फ्लुएंस रे मैं को टिके बड़ कर दउची डेफिनेशन टा बुझी जातो कोएर्शन रो डेफिनेशन बुझंतु द एक्ट ऑफ फोर्सिंग समवन टू एक्ट इन एन इनवॉलंटरी मैनर यूज ऑफ थ्रेट्स इंटिमिडेशन और सम अदर गोटे प्रेशर पकई काम करियो कह जे कोएर्शन अनड्यू इन्फ्लुएंस कौन अनड्यू इन्फ्लुएंस होची मैनिपुलेटिंग समवन एक्सप्लॉइटिंग पोजीशन ऑफ पावर बा तार डिसीजन बा बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करवा ता कह जे अनड्यू इन्फ्लुएंस सिंपल कथा यार कैरेक्टरिस्टिक्स होची कोएर्शन कौन ऑफन इन्वॉल्व्स ओवर थ्रेट बेले बेले धमक चमक मध्य हुए बुझे मैं जोड़ा कि पावर इम्बालांस पूरा एग्जांपल किंतु अनड्यू इन्फ्लुएंस रे कौन हुए एठी साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट करा जाए मिसयूज ऑफ पावर एंड अथॉरिटी एथिरे देखिबे आपण लीगल एस्पेक्ट अछि कोएर्शन रे आपण आईन सहायता नहीं परिबे किंतु एठी आईन सहायता नबाटी डिफिकल्ट कारण जो अनड्यू इन्फ्लुएंस ता तार किछि माने कंक्रीट गुड शेप एंड साइज न थाए कोएर्शन होची कोएर्शन कैन मैनिफेस्ट एज बुलिंग हरासमेंट वायलेंस इन वर्कप्लेस एक सब कहा जाए कोएर्शन किंतु जोटा अनड्यू इन्फ्लुएंस ये होची एक्सप्लॉइटेशन ऑफ पावर ऑफ डायनामिक्स जो कहते ये सब से बुक रे अछि पढिया पड़ियो इम्पैक्ट ता जानतु क्रिएट्स हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट हॉस्टाइल एनवायरनमेंट क्रिएट करे होलिस्टिक नो हॉस्टाइल बुझियो एठी स्ट्रेसफुल वर्क एटमॉस्फेयर क्रिएट करा जाए एथिकली ये सीरियस कंसर्न माने एथिक्स रे बा एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू रे कोएर्शन होची गोटे सीरियस कंसर्न एथिकल कंसर्न आउ ए जगह रे मैनिपुलेशन रे मैं जो अनड्यू इन्फ्लुएंस रे एथिकली क्वेश्चनेबल आज इट अंडरमाइन्स ऑटोनॉमी ऑफ इंडिविजुअल्स गोटे एग्जांपल आपन ए दिया है देखंतु forcing an employee to work overtime regularly under the threat of termination तेणु चाकरी बाहर कर दो बोली बाध्य होकर फोर्सफुली काम करिया पड़े ओवरटाइम सेक्सुअल हारासमेंट मध्ये कोएर्शन जाउची बुझे अनड्यू इन्फ्लुएंस रे कोन जाउची ए मैनेजर सजेस्टिंग दैट हेल्पिंग देम विथ पर्सनली निजर बेनिफिट्स पाई मैनेजर फोर्स करूची जे एई प्रकार सहयोग चाहूची बुझिउची तापर टिके हमें जिबा कंक्लूजन को कंक्लूजन ता देखो द डिस्टिंक्शन between coercion and undue influence in the workplace is pivotal for nurturing healthy and ethical work environment. By embracing comprehensive policies, ensuring whistleblower protection, setting of ethics in hotlines, and investing in leadership development, we can lay the foundation for cultivating an atmosphere characterized by profound respect and unwavering integrity. या माने बुझे रचे गोटे हेल्दी एटमॉस्फेयर पाई वर्क कल्चर पाई कोएर्शन और अनड्यू इन्फ्लुएंस को हटा जीवा दरकार देयर शुड बी चेक एंड बैलेंस देयर शुड बी प्रोसेस टू रिमूव ऑल काइंड्स ऑफ unethical influence undue influence also create healthy atmosphere for the employees to work for the organization. So in any organization, all these kinds of unethical
coercion or intimidation, threats, persuasion, pressure, creating pressure belt, situation where you have no question, right? All these should be removed, should be eradicated, should be checked, must be checked to achieve, must be checked to achieve organization goal in a fruitful manner, in a ethical manner, right? ଭାବୁଛି ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଆପଣ ମାନେ यार आंसर जो दिया है बुकलेट रू पढ़िकी आपण व्हाट्सएप नंबर जो अच्छी से चेक करें, पिला चेक कर। थैंक यू वेरी मच। ये बुकलेट टाको कंप्लीट करंतु धीरे धीरे। थैंक यू वेरी मच।